सब्सक्राइब कीजिए एम टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे विंडोज़ इंस्टॉल करने के वक्त ऐसा प्रॉब्लम आता है? तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हो विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 3। देख सकते हैं विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस डिस्क। दिस सेलेक्ट डिस्क हैज़ एन एम्बियर पार्टीशन टेबल ऑन EFI सिस्टम। विंडोज़ कैन ओनली बी इंस्टॉल GPT डिस्क। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशरफुल। आप देख रहे हैं एम टेक यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बार मैंने EFI DVD/CD-ROM सेलेक्ट किया था, इसलिए विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो रहा था। मैं फ़िलहाल SATA ODD मोड सेलेक्ट करता हूँ। फ़िलहाल मैं DVD से इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका पेन ड्राइव का भी मोड आ जाएगा। देख सकते हैं विंडोज़ रन हो रहा है। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं। इंस्टॉल नाउ। Setup is starting. देख सकते हैं की के लिए पूछ रहा है। फिलहाल मेरे पास कोई की नहीं है, प्रोडक्ट की नहीं है। डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। मैं विंडोज़ 10 Pro 64 बिट इंस्टॉल करने वाला हूँ। नेक्स्ट करवा देता हूँ। एक्सेप्ट लाइसेंस कर लेता हूँ। नेक्स्ट कस्टम इंस्टॉल। देख सकते हैं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पहले प्रॉब्लम आ रहा था इसमें इंस्टॉल नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डिस्क पे इंस्टॉल करूँगा तो 100 GB है, उसके ऊपर वाला पे नहीं। तो पहले इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट हो गया, सिंपली नेक्स्ट दबा देते हैं। विंडोज़ इंस्टॉल हो रहा है।
Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. You can use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, you can just mute your PC. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to India. Is that right? Your keyboard is set to English, India. Want to stick? Do you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and type what you want to name your account. Okay, now type a password for your account. Hey, look, that's me, Cortana. These are the settings. Okay, that's the last step. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. देख सकते हैं विंडोज़ चालू हो गया। सबसे पहले दिस पीसी को शो करते हैं। देख सकते हैं मेरा कोई डाटा लॉस नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।